PYQ, April shift. The chapter name is Electromagnetic Induction. Fine. I'll start with the first problem. A rod of length 60 centimeter rotates with uniform velocity about its perpendicular bisector in a uniform magnetic field. The direction of magnetic field is parallel to axis of rotation. The potential difference between two ends of the rod. So we are discussing now the rotation of rod in an uniform magnetic field. This is the rod. This is a rod. It is rotating. This is the axis. Now, जो magnetic field यहाँ पे it is getting directed like this, uniform magnetic field. इसका direction दे चुके हैं. Parallel to axis of rotation. The potential difference between the two ends of the rod. This is O, A, and this is. What is the uniform magnetic field? This will be L by 2. This will be L by 2. Agar like, what is the EMF induced? So directly. So this is the rod. पहले ऑफ रॉड का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे हम. बाद में I'll come to this problem. Let me explain just basic concept. So this rod is rotating like this. So this will have the velocity. यहाँ पे there's a magnetic field. EMF induced is a small element में. What is the EMF induced? Just same rod I'm assuming. और जो rod है वही यहाँ पे assume कर रहा हूँ मैं. The half length of the rod. पहले half length में कितना EMF induced हो रहा है वो कैलकुलेट करेंगे. So this should be equal to कितना? DE should be equal to BV dx. इसका tangential velocity कितना है? At a distance x we assumed element. So EMF induced in the small element BV dx according to motion EMF. Then V value tangential velocity हुआ x omega dx. So A हुआ B omega x dx. EMF हुआ 0 to L. So total EMF induced will be B omega L square by 2. Now यहाँ पे हम potential find out करेंगे. इसका potential कितना होगा? How to get the potential? Again the left hand thumb rule. This is a thumb, pointing finger, index finger. Thumb का हुआ direction. Thumb will give direction of E bar. ये जो pointing finger है, this will be directed along B bar. ये जो middle finger है, this will be along velocity vector. यहाँ पे लगा दो तुम B bar velocity. So ये जो end है, this end will be positive. And E bar vector will be directed toward the positive terminal. So which end will be positive? This end will be positive. This will be negative. Thumb will be along E bar. Index pointing finger along B bar. Middle finger along velocity vector. So this end will be positive. This will be negative. Then this rotating rod, इसका EMF कितना हो? B omega L square. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे replace कर देंगे. I'm explaining concept also. सर यहाँ पे EMF से इसका वैल्यू कितना है? EOB. इसका वैल्यू EOB. दोनों का वैल्यू this what you can write it. Potential difference पूछ रहे हैं AB. So we'll write equation VA plus EOA minus EOB minus VB 0. इसका तो 0 हो ना. Okay sir, like आप ये इक्वेशन कहाँ से ला रहे हैं? KVL जहाँ पे आप शुरू होते हैं वहां पे पॉजिटिव प्लस VA. आप नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहे हैं. अगर तुम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल मूव हो रहे हो तो राइज इन EMF EOE.
Positive to negative terminal, fall in EMF minus COB minus potential difference VB. So VAB equal to EOA minus EOB. So therefore the potential difference will be 0. This is a basic idea. Okay, fine. Okay, next problem ले लेंगे. Now, 3 identical resistors with 2 identical inductors connected to an ideal battery, and we have a key here. The current through the battery after a long time after switch has been closed. So this is something problem related to RL circuit, growth and decay of current in RL circuit. Then after long time, what do you mean by after long time? At T equal to infinity, जहाँ पे भी इंडक्टर है, that should be short circuited. The inductor will be shorted. इसका सर्किट ड्रॉ कर लेंगे हम. जहाँ पे भी इंडक्टर है उसको शॉर्ट सर्किट कर दो. दिस इज द कॉन्सेप्ट. जो बैटरी है, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे जो इंडक्टर था उस जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. एंड दिस इज द 12 वोल्ट. आर का वैल्यू 12 ओम. देन इंडक्टर के जगह पे हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं. सो वाई शॉर्ट सर्किट सर? लाइक इंडक्टर कहाँ पे गए? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला I equal to E by R 1 minus e to power of minus t lambda. Put t equal to infinity. After long time means t equal to infinity. After long time. So put in this e to power of minus infinity. E to power of infinity का value कितना हुआ? 0. So what is the current? The current flowing in inductor will be a constant and equal to E by R. This was the basic circuit. Growth and decay of current concept just रिवाइज कर रहा हूं. So after long time जो current flow हो रहा है, so this will call steady state current. अगर यहाँ पे देखो, this current depends on what? Only this E and R, no? So what is the role of inductor? Inductor जैसे short circuit जैसे behave करता है. Inductor will you have to replace with a short circuit, and the current यहाँ पे circuit में depends only on E and R. So therefore at t equal to infinity or after long time, जहां पे भी इंडक्टर है उसको शॉर्ट सर्किट लगा दो. सो तीनों रेजिस्टर्स नो दे आर पैरेलल. सर हाउ यू कैन से पैरेलल? यहाँ पे करंट भेजो, टोटल करंट, एक करंट इट विल गेट डिवाइडेड, यहाँ पे ब्रांच हो जाता है. जब भी करंट ब्रांच होता है बोलते हो देन विल से दे आर पैरेलल. तो ये तीनों रेजिस्टर्स नो पैरेलल में. सो व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल? इसका हम R/3 कर देंगे बिकॉज पैरेलल. करंट थ्रू द बैटरी पूछ रहे हैं. ओके, दिस करंट, so I equal to 12 by R/3. 12 रेजिस्टेंस का वैल्यू भी 12 है, so 3 एम्पियर. यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है? दिस विल बी 3 एम्पियर. द करंट फ्लोइंग, so the current, यहाँ पे जो करंट है ना, इट विल ब्रांच आउट. whenever करंट ब्रांचेस, जब भी करंट ब्रांच होता है देन वो तीनों जो भी ब्रांचेस है दे विल बी पैरेलल. देन द रेजिस्टर्स आर साइड टू बी पैरेलल. सीरीज पैरेलल, थोड़ा बहुत करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट तुमको याद कर लेना है. एंड नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्किट, ये जो बेसिक फॉर्मूला. अगला प्रॉब्लम ले लेंगे. ये जो सिंपल एलसी ऑसिलेशंस का. इन एलसी ऑसिलेटर इफ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिकम ट्वाइस एंड 8 टाइम्स रेस्पेक्टिवली. थोड़ा बहुत आई थिंक सर्किट आपको याद रहेगा. दिस इज द एलसी ऑसिलेशंस, सी एंड एल. What is the resonant frequency? F naught equal to 1 by 2 pi L line C. Next, the value of X. Resonant frequency
will change with L and C. Twice and 8 times. Inductance का value will become 2 times. Capacitance का value 8 times. Then 2 pi 16 LC. यहाँ पे आप 4 बार निकाल दो. 2 pi root of LC. So 1 by 2 pi root of LC. F naught by 4. The resonant frequency of oscillator becomes X times its initial resonant frequency. So what is X? X का value. So X equal to 1 by 4. LC oscillations, LC oscillations. Sir, okay, sir, like we don't know this formula, sir. अगर आपको formula याद नहीं रहे तो little bit you can bring your SHM concept. Initially यहाँ पे charge ले लो और Q minus Q and यहाँ पे current flow हो रहा है. Then apply the KVL plus Q by C minus or plus di by dt equal to 0. Then QCL I what is I? dq by dt. This will be minus. And यहाँ पे capacity is discharging. So d by dt, I will become dq by dt. So L d square q by dt square plus q by LC. Omega square q. Omega के जगह पे क्या है? 1 by LC. And this omega 1 by root of LC. And omega 2 pi f लिख सकते. Fine. F naught omega naught लिख देंगे. इवन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद है, जब टीचर पढ़े तो याद है. वो जो याद रहे तो उससे भी आप फॉर्मूला एग्जाम में डिराइव कर सकते हैं. अगर आपके पास यह फॉर्मूला आ चुका है ना, then what happen? You can solve this problem. So better to revise formula. The resonant frequency in LC oscillation circuit 1 by 2 pi LC. और यही फॉर्मूला तुमको सीरीज रेजोनेंस में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इक्वल 1 by 2 pi root of LC, दोनों का फॉर्मूला सेम है. सीरीज सर्किट, सीरीज एसी सर्किट में भी आपको यही कॉन्सेप्ट रहेगा ना, लाइक इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, एसी सोर्स, और इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम फॉर्मूला. कंपेयर कर लो. लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स. We'll take the next question. Find the mutual inductance. Find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop find the mutual inductance in the arrangement when a small circular loop of wire of radius r is placed inside a large loop of wire of side length L. The loops are coplanar. So what is the approach like? Mutual inductance and little bit electromagnetism, दोनों का like a concept यहाँ पे हम ले लेंगे. So this we will construct the इसका जो loop है. So this will write like this. ये जो outer loop है, इस पे हम यहाँ करंट एज्यूम कर लेंगे I. पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बिना लूप के. एक्चुअली दिस द बेसिक आइडिया. So like what you are doing, first we will calculate the magnetic field due to one side. Fine. So ये जो एंगल हुआ 45 डिग्री.
इसका लेंथ हुआ L/2, L/2, and this will be D. At center O, will calculate magnetic field due to this current carrying wire. Magnetic field due to finite current carrying wire. Electromagnetism by Savart law. Mu naught I 4 pi D sin alpha plus sin beta. याद कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फॉर्मूला है. Then what are alpha beta? Angle made by the line joining the point O with the upper end. This will be alpha, this will be beta. So alpha beta का वैल्यू हुआ 45 डिग्री. हमें डी का वैल्यू पता नहीं है, इसका tan 45 ले लेंगे. इस ट्राइंगल में tan 45 इक्वल टू L/2 by D. Then L/2 equal to D, because tan 45 equal to 1. So D का वैल्यू कितना है? L/2. So we'll substitute all. Mu naught I 4 pi, D का वैल्यू हुआ L/2, इसका वैल्यू 1/2, and this is 1/2. Mu naught I 2 pi L, A हुआ 2/√2. So total mu naught I by pi L√2. This is the magnetic field due to one wire, one side. इस वायर के वजह से सेंटर ऑफ द लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, that we have calculated. And this concept from where? By Savart law, electromagnetism chapter. Then what is the net field? Net field B naught should be equal to 4 times of B. Means ये जो वायर प्रोड्यूस कर रहा है, सेम फील्ड ए वायर भी प्रोड्यूस करता है, ए साइड भी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इसका भी लेंथ कितना है? स्क्वायर लूप है, इसका भी लेंथ कितना है? एल, और ए बी डिस्टेंस कितना हो जाता है? L/2. द सेम थिंग डी. So what is the net field produced by the square loop at the center O? वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. So this should become equal to 4 times mu naught I pi L√2. So इसका वैल्यू 2√2 mu naught I pi L. Then what is the formula? Flux linking the circular loop is equal to mutual inductance into, first we'll calculate the flux linking the circular loop. This will be equal to B naught into pi R square. B naught का वैल्यू 2√2 mu naught I pi L pi R square. Mu naught pi cancel हो जाता है, so this L and I high let B है. Mutual inductance का definition: flux linking the circular loop to the current in the square loop. सर्कुलर लूप का कितना फ्लक्स? √2 mu naught R square by L. So 2√2 mu naught R square by L. So this I and this I will cancel out, no? Or एक step. So 2√2 mu naught R square L. ये हुआ हमारा आंसर. This is a mutual inductance. So option 3 ले लेंगे हम. Fine. So आपको select Savart law, very very important. Simple, like बड़े बड़े like derivations, बड़े बड़े problems करने के वजह से simple ना. What is the magnetic field due to the ring? What is the magnetic field due to finite wire? अगर छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रहे तो, याद है तो अपने आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं. बिना बिना इस फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते. आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस पता है, फ्लक्स कहां से करेंगे? फ्लक्स लिंकिंग द सर्कुलर लूप, उसके लिए तो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से हमको? थ्रू बायो सावर्ट लॉ.
ऑल आर इंटरलिंक्ड यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ए वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस क्वेश्चन, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ए एंड बी are placed in same plane with their centers coincident, their mutual inductance between them। यहाँ पे आपको लूप बी, इसका रेडियस बी है और एक छोटा सा लूप है अंदर, इसका इसका कितना है, दिस रेडियस इज सी। तो विल ड्रॉ इट, ये बड़ा वाला सर्कुलर लूप है, छोटा वाला यहाँ पे अंदर अंदर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। दिस इज द रेडियस ए हुआ, इसका रेडियस हुआ बी। तो विल एज्यूम यहाँ पे करंट एज्यूम कर लेंगे। देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, बायो-सावर्ट लॉ फॉर्मूला म्यू नॉट I by 2B. This is the magnetic field produced by the current carrying circular loop at its center. So then, okay, fine. Now, flux linking the smaller loop. यहाँ पे हम will give name 1 and 2. There's a loop 1 or loop A, loop B already is there. No, we'll use same symbol. There's a magnetic field. Current flowing in the loop B will produce magnetic field at the center. Then flux linking the loop A calculate करेंगे. That should be equal to magnetic field B naught into pi A square. Our next question comes. So like आप B naught जो find out कर रहे हैं वो तो center of loop में है, and आप loop बोले तो there's everything sir, like loop बोले तो not point, उसका एरिया रहता है पाई ए स्क्वायर। हमें तो यहाँ पे magnetic field सेंटर ही पता है, व्हाट अबाउट दूसरी जगह पे, तो व्हाट इज द कंडीशन गिवन। यहाँ पे एक बार फिगर में देख लो, बी वेरी मच ग्रेटर देन ए, मीन्स इसका रेडियस इतना छोटा है कि लाइक magnetic field आप जो सेंटर पे यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं वो हर जगह लूप में वही वैल्यू रहता है। दिस इज अ मैथमेटिकल कंडीशन। तो व्हाई वी आर एज्यूमिंग, व्हाई वी आर राइटिंग दिस, बिकॉज बी वेरी मच ग्रेटर देन, मीन्स द डायमेंशंस, इसका डायमेंशंस ये छोटा, लूप ए का डायमेंशंस इतना छोटा रहता कि छोटा है कि द magnetic field हर जगह बी नॉट ही रहता है। ओके देन यहाँ पे we'll write it b naught value mu naught I b, current in the loop b 2b pi a square. Mutual inductance, flux linking coil A due to current in the coil B. So mu naught I b pi a square 2b IB. IB get cancelled, so mu naught pi a square 2b. Mu naught pi a square 2b. Fourth option. And mutual inductance depends only on the physical, not on the current. How much of current flows? This will not determine the mutual inductance. Mutual inductance depends upon the geometrical conditions only, the physical dimensions. Look at the physical dimensions. A, what is A? Radius of the loop A. What is B? Radius of the loop B. Fine. बेटर याद कर लो ये सभी, एग्जाम में डायरेक्ट यू कैन वर्कआउट नो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कितना, 10 या around 10 cases are there. Those 10 cases better remember, no? Mutual inductance, wire and loop, between two loops, square loop and circular loop. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The current in an inductor is given by 3t plus 8. The magnitude of EMF produced in the inductor, the self-inductance of inductor. I think coil, inductance coil के बारे में, solenoid. What are the names? Inductor. कुछ क्वेश्चंस में इसको solenoid भी बोल रहे हैं. You should not get confused. Solenoid of very high inductance only will call inductor. Simple idea. एग्जाम में सोलोनाइड इंडक्टर, इसको हम सोलोनाइड भी बोल सकते हैं. फाइन. तो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन? द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस सोलोनाइड इज इक्वल टू एल इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पूछ रहे हैं. So what is EMF induced? 12 into 10 to the power of -3 L. Rate of change of current.
डी आई बाई डी टी हमें क्या यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है कि करंट के बारे में है। करंट इज इक्वल टू 3t+8 डी आई बाई डी टी। इसका डी आई बाई डी टी हुआ 8। 8 तो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 3t विल बी 3। इसका डी आई बाई डी टी यहाँ पे वैल्यू रख दो। सेल्फ इंडक्टेंस 12 इंटू 10⁻³ ये हुआ 4 इंटू 10⁻³ और 4 मिली एम्पीयर। द आंसर विल बी 4। सिंपल डेफिनेशन EMF induced across the inductance coil is equal to L into di/dt। अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो ये प्रॉब्लम इजी से कर सकते हैं आप। बिना फॉर्मूला नो 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 नॉट नॉट पॉसिबल। सो जाके तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, फैराडेस लॉ, ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, इसका करीब करीब आपको अराउंड 10 फॉर्मूला लग जाएंगे और एलसी ऑसिलेशंस बस याद कर लो। विद दैट फॉर्मूला यू कैन मैनेज जो भी मैं हर एक क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा हूँ। तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स? फैराडेस लॉ इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। देन नेक्स्ट लेंस लॉ है, उसके बाद मोशनल ईएमएफ। फाइन। देन यहाँ पे हम थोड़ा E²R और लेंस लॉ का कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू वीडियो में आई एक्सप्लेन कन्वेंशंस, सो ट्राई टू अप्लाई देम। दिस इज मोशनल ईएमएफ, दिस इज फैराडेस लॉ, लेंस लॉ, समथिंग पावर रिलेटेड, दीज थिंग्स यू यूज फॉर्मूला। इसके बाद डायरेक्टली ग्रोथ ऑफ करंट इन आरएल सर्क्यूट, ये जो फॉर्मूला ER1 माइनस E⁻⁻T लैम्डा, वे लैम्डा टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्क्यूट। इसका ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला है, ग्रोथ एंड डीके का फॉर्मूला। देन एंड डीके का फॉर्मूला, दिस है ग्रोथ ऑफ करंट। डीके का फॉर्मूला ओनली इतना ही है, डीके ऑफ करंट। सेल्फ इंडक्टेंस ऑलरेडी दे चुका हूं, म्यूचुअल इंडक्टेंस E2 di1/dt और फ्लक्स लिंकिंग सेकेंड कॉइल टू द करंट इन फर्स्ट कॉइल। LC oscillations, omega equal to 1/LC, oscillation frequency. Then self-inductance of a coil, mu naught Ni, mu naught N square S/L. Self-inductance of a coil of different shape, ये जो स्प्रिंग जैसे जैसा स्प्रिंग शेप है ना, उसका सेल्फ इंडक्टेंस है। आई थिंक देर आर 10 फॉर्मूलास आर देयर। अगर ये जो फॉर्मूलास आपको याद रहे तो इजिली यू कैन मैनेज। पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, व्हाट डू मीन बाय ईएमएफ, व्हाट डू मीन बाय फ्लक्स, लेंस लॉ, मोशनल ईएमएफ, ये तेरी सब पढ़ लो। ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद में देन फॉर्मूला याद कर, देन कम फॉर प्रीवियस PYQ, कुछ सॉल्व करो, देन यू गेट कॉन्फिडेंस, दैट बी इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। जो फॉर्मूला पिछले पिछले प्रॉब्लम में करे थे ना, उसी के ऊपर है। Current changes from -2 ampere to ampere in 0.2 second. EMF induced. What is the formula? E equal to L di/dt. Change in current. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कौन पूछ रहे हैं? सो EMF कितना हुआ इंड्यूस्ड? 1 वोल्ट। इंडक्टेंस के बारे में चेंज इन करंट, करंट जो है -2 टू 2 एम्पियर, इसको हम थोड़ा ऐसे लिख देंगे, डेल्टा आई। चेंज चेंज बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल करंट कितना है? 2। इनिशियल इनिशियल करंट कितना है? -2। देन टाइम 0.2। चेंज 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 बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल का वैल्यू कितना है? 2। इनिशियल का वैल्यू कितना है? -2। सो ये हुआ L इंटू 4, 0.2। L का वैल्यू हुआ 0.02/4 और 1/2।
इंटू 0.2 और इसका 1/2 मीन 0.5 0.5 इंटू 0.01 1/2 0. So this value 0.5 into 0.01 इसका वैल्यू हुआ 5 मिली हेनरी और एक ए ऑप्शंस मिस है यहाँ पे we'll go for option 3 5 मिली हेनरी. This change delta means final current minus initial current. नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेंगे स्क्वायर लूप. सो यहाँ पे हम यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर लूप है. इसका रेजिस्टेंस 100 ओम है. इसका एरिया भी देख चुके हैं 3.6 into 10⁻³ solid uniformly being pulled out of magnetic field. Work done in pulling the loop out of the field. You know, square loop यहाँ पे loop है. So this we will work done is asking the work done in pulling the loop out of the field in 1 second. यहाँ पे आपको loop दिख रहा है. this one. इसको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है. तो दिस लूप यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ. दिस लूप विल कम आउटसाइड. तो यहाँ पे स्लोली मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड कितना बी. इसको हम कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए कितना वर्क करना चाहिए. इसको लूप को हम स्लोली धीरे से निकालते हैं. तो द फ्लक्स अर्लियर फ्लक्स इज इनिशियल फ्लक्स. यहाँ पे फ्लक्स लिंकिंग तो 0 है. तो पहले फ्लक्स लिंकिंग कैलकुलेट करेंगे. तो फ्लक्स लिंकिंग इक्वल टू n इंटू बी इंटू ए. नंबर ऑफ टर्न्स कितना 10. मैग्नेटिक फील्ड 0.5 एंड 3 पॉइंट एरिया 3.6 इंटू 10⁻³ तो इसका वैल्यू हुआ 5 इंटू 3.6 5 इंटू 3.6 इसका हुआ 18. into 10⁻⁻⁴. This is the flux. इनिशियल फ्लक्स लिंकिंग वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर. कौन सा तो यूनिट दे सकते हैं आप. और 1.8 मिली वेबर. देन व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम और change in flux by time. So this will be by delta t. Initial flux कितना. final flux will be 0 because यहाँ पे magnetic field no magnetic field. यहाँ पे no field. So 0 minus इसका initial flux हुआ 18 into 10⁻⁻⁴. कितने टाइम में 1 सेकेंड में हम निकाल रहे. So this magnitude will only calculate the magnitude. इसका हुआ 18 into 10⁻⁻⁴ volt. Then how you define the average power? E average by resistance. So 18 into 10⁻⁻⁴ resistance का value हुआ 100. So this will be 18 into 10⁻⁻⁶. E square. बहुत धन पूछ रहे हैं ना. तो थोड़ा कैलकुलेशन लेट मी चेक इट. 0.5 into 10 will be 5. 5 into 3.16 will be 18. 10⁻⁻³ हुआ. Then इसका स्क्वायर 18 स्क्वायर का 18 स्क्वायर
324. So 324 into 10 to the power of minus 6. And this 100. So average power dissipation कितना हुआ? 3.24 into 10 to the power of 6. How we define the average power? Work done by time. ये जो basic formula. Then work done equal to average power into time. कितना time में हम निकाल रहे हैं loop को? डेल्टा टी 1 सेकेंड में लूप को हम मैग्नीफील्ड से हटा रहे हैं. सो यहाँ पे 3.24 into 10 to the power of minus 4 into 1. यहाँ पे minus 6. So nearest integer 3. Approximately 3 into 10 to the power of minus 6 joule. The problem very easy with this approach. Average EMF का थोड़ा concept हम यहाँ पे ले रहे हैं. We can also calculate the charge flown. Charge flown is also equal to, because what is the average EMF? Equal to delta phi by delta t. Then इसको हम current by resistance भी बोलते हैं. And current को क्या बोलते हैं हम? Charge flown per unit time. तो charge flown कितना हुआ ना formula? Delta Q is equal to change in flux into resistance. Even I can also calculate the charge flown. कितना charge flow हो चुका है loop में. That also you can tell by in the same problem, because no, we know rate of change of flux and resistance के बारे में पता है. We can also calculate the charge flown through the circuit. There are some ideas are there. अगर आप loop को मैग्नीफील्ड से हटाते हो, then कितना वर्क कर सकते हैं हम? This is the formula. Then कितना charge flow हो रहा है loop में? That also we can calculate using formula. So these are some ideas you might have learned in the regular class. अगला problem ले लेंगे. ये जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ये तो एसी सर्किट का प्रॉब्लम है. Then we'll take this one. A square loop of side 15 centimeter being moving towards constant speed. The enters magnetic the value of induced EMF in the loop. This is the magnetic field and this loop is entering. ये थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ. Yeah. This is a loop. ये जो loop है, this is entering into this magnetic field. यहाँ पे ये जो भी ब्लू कलर का एरिया है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है. और this is a loop. ये जो loop है, now this is entering into magnetic field. Then the volume of EMF induced the loop at t equal to 10 सेकेंड. इसका लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. द वेलोसिटी कितना दे रहा है? 2 सेंटीमीटर. और ये स्क्वायर लूप, इसका डायमेंशन कितना है? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. देन द लूप इज एंटरिंग. थोड़ा लाइक वी विल हैव सम रफ डायग्राम. ये जो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे लूप यहाँ पे लूप ड्रॉ करेंगे. इसका लूप का कितना स्पीड है? v. यहाँ पे b है, हर जगह यहाँ पे b है. इसका वेलोसिटी कितना है? 2 सेंटीमीटर. और इसका लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर. नो इज आस्किंग एट 10 सेकेंड्स. और इसका मैग्नेटिक फील्ड का कितना विड्थ है? 50 सेंटीमीटर. तो 10 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस मूव कर सकता है लूप? सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लूप विल कैलकुलेट. दिस शुड बी इक्वल टू v into t, distance covered by the loop.
इसका वेलोसिटी 2 और टाइम कितना दिया है 10. सो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस like it will move. So 20 centimeter means the loop will come, the value of EMF induced in the loop at t equal to 10 seconds. Velocity to a side loop 15 centimeter. 10 seconds में तो ये तो complete अंदर हो जाता है ना. एक बार देख लेंगे 1 second में कितना. This will move 10 centimeter. After 1 second ये 10 centimeter अंदर गए तो इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर बचा कितना 5 सेंटीमीटर. और दिस इज एट 1 सेकेंड t इक्वल टू 0. शायद मेरा डेटा ओके देन 1.5 सेकेंड में लूप कंप्लीटली अंदर चले जाता है. t equal to 1.5 second, the loop will be completely in magnetic field. Then at t equal to 1.5 second में at t equal to 2 seconds में the loop करीब करीब यहाँ पे आ जाता है. This will be 5 centimeter. यहाँ पे 15. इसका नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछे like EMF इंड्यूस पूछे. So width of field like फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ कितना है 50 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर यहाँ पे बोले तो 30 सेंटीमीटर विल बी हियर. तो कंप्लीट लूप इज देयर इन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे. तो द फ्लक्स विल बी कांस्टेंट. यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है d∅dt विल बी 0. देन नो EMF विल बी इंड्यूस्ड. जो मेरे को डेटा यहाँ पे है उसी वजह से आई डोंट नो इसका लेंथ अगर कुछ दे रहे तो आई वुड हैव चेंज्ड आंसर. तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ लाइक द लूप इज जस्ट वन ऑफ द साइड इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड. ओके फाइन. So the EMF induced will be 0. Okay, bacho, like these are the some problems what we have discussed based on the electromagnetic induction 2024. So you have to revise all the basic formulas, what all I told you. Just follow the guidance. First revise the concepts. There are around 12 or around 10 formulas are there. Recollect them. Solve at least two years previous means. Need not to solve all. At least 2 years now, if the time constraint is there. तो सॉल्व करने के बाद यू गेट सम बेसिक पिक्चर मेंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और हम कैसे सोचना है और हमें क्या करना है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, thank you for great support. Please share, subscribe our channel. So we are a very small channel. Without your support, I cannot grow. So I request every student, जो आपको friends है, batchmates है, उसको share करो please. Thank you for great support.